हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर 4 मोर ऑन फोटोशॉप में जितने भी एक्सरसाइजेस है वो सब हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। नंबर 1, डैश टूल्स आर यूज्ड टू रिमूव ऑल द imperfection from the pictures. So everyone, इसका आंसर होगा retouching tools. Number 2, dash tool is used to replace the color of the selected object to any other color. So everyone, इसका आंसर होगा color replacement. Number 3, dash move tool can be used to select an object and transfer it from one position to another in the same image or in another image. So the answer will be content aware. Number 4, dash tool is used to copy one area of an image to another area of an image. So the answer will be clone stamp. Number 5, dash tool is used to paint blur effect on the required portion of an image. So the answer will be blur. Blur tool is used to paint blur effect on the required portion of an image. Write T for true and F for false statement. Number 1. In spot healing brush tool, you do not require to select the source point from where the tool picks the sample pixel. So this statement will be true. Number 2. In using crop tool, when the selected portion is moved, the background area is filled automatically with the existing background. So this statement will be false. Number 3. Clone stamp tool is used to replace the color of the selected object to any other color. So this statement will be false. Number 4. Sharpen tool increases the contrast between the pixels by lightening the light pixels and darkening the dark pixels. So this statement will be true. Number 5. Smudge tool give an effect of spreading the paint across the image like you drag the finger over wet paint. So this statement will be true. Now next, tick the correct option. Number 1. Dash brush tool is used to remove the unrequired spots and small objects from the picture. So the answer will be spot healing. Number 2. Dash tool is used for retouching and repairing photographs that are damaged by putting a patch on it. So the answer will be patch tool. Number 3. Dash tool is used to sharpen the pixels of an image to increase focus and add clarity. So the answer will be sharpen. Number 4. Retouching tools are used to remove dust from the image. So the option number A is blemishes and option number B is scared. So the answer will be option number C, both A and B. Number 5. The existing color of an object will be replaced with the selected foreground color using dash tool. So the answer will be option number B, color replacement. सो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।